start. Okay, I guess my screen is visible to you all. So basically, this entire project is about fluid structure interaction. But before that, you should know what is FEM simulation. So something like finite element simulations. And then once you get a hands on it, then you have to try something like a fluid simulator where you have a channel and there is a bend in this channel, and what will happen at these junctions you should able to simulate. And then this is a 2D channel, then you might have a third problem with a 3D channel, and similar kind of turns are there, maybe a 3D problem of the same thing. And once you do the simulation for these kind of structure, then we go for a fluid structure interaction, which is FSI. Okay, अब इसमें basic simulation जो है I will teach you, provided you have a software called console, and if you have the other software then you have to learn on your own. I will help you in that also, but I may not able to teach you because out of the two main simulators I used console. Now how to get this softwares I will tell you. So there are two ways to get a console. First is from the console website itself. Now, as I mentioned to you, this is a project in collaboration with IIT Bombay, but not all the interns will go to IIT Bombay. Maybe only one or two will get this opportunity if they prove themselves. Currently, I want everyone to learn this particular software called Console. Now, to get the license file, there are multiple ways. Either you can use a console website itself and use my login ID password to download the license, but that will be one user license. So, anyways, if one of you is working on that license, others cannot work, or they have to put their machines into the offline mode. The second option is we create a virtual machine and do it. But even if we are doing it using virtual machine, there are some problems. So what are those problems is, once you use a virtual machine, not your entire system capability is used into the simulation, which is another problem. And that's why we have to go for the third option, which is a cracked version of the console. Maybe just for your initial simulations, you use the crack version. And once you learn everything, then you can use my official license copy to run the simulations there, because there is a console conference every year, and if we can send our paper to that reputed conference, it will be great for us. Maybe this year it will be online, so maybe next year or something like that. We are looking for a publication out of this. Also, we are trying to do some innovative thing. Now, what is this innovative thing? I will tell you. So basically, I am an expert in microfabrication. So I can fabricate a very small channels whose dimensions are few microns and even in nanometers. So I have constructed a channel with a height of 500 nanometer and so on. So you can imagine the physics at this particular scale is totally different than what you see in your regular pipes. All the flow becomes laminar because of the Reynolds number and so on. But basically, what this particular thing is called microfluidics. So basically, these structures are used for multiple applications. We are focusing on medical applications of microfluidics, where you will use a bodily fluids, which are saliva, blood, and sweat. So these are the three main inputs. Now you can imagine they are more like all of them are water based. So initial simulations can be done on the water itself using the regular properties of the water. But once you get hands on your software, then you can try out more of these special properties of saliva or blood or sweat, etc. So ये चीज करती क्या है? Even urine is there. So urine is another bioproduct that we use in our microfluidic chip.
तो हम लोग इसमें डायग्नोसिस में इसको यूज करते हैं। डायग्नोसिस में क्या करते हैं हम लोग कि डायग्नोसिस में हम पेशेंट की कंडीशन पता कर लेते हैं इन एन नॉन इन्वेसिव मैनर। अगर ब्लड नहीं है तो स्वेट, सलाइवा एंड यूरिन यू कैन कलेक्ट इट विदाउट एक्चुअली प्रिकिंग द पर्सन। और अगर ब्लड भी है तो हम माइक्रो लीटर्स में काम करते हैं, जिसकी वजह से एक फिंगर प्रिक भी काफी हो जाता है रादर देन टेकिंग आउट द ब्लड फ्रॉम 2 ml सिरिंज, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। आपने ये प्रिकिंग वाले माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइसेस देखे होंगे कुछ जगह जहाँ पे डायबिटीज चेक होता है घर के घर में, तो एक ब्लड ग्लूकोज शुगर स्ट्रिप आती है, उस पे आप खुद को प्रिक करके एक ड्रॉप ऑफ ब्लड डाल दो एंड इट विल टेल यू योर शुगर लेवल। तो हम भी कुछ इसी तरह से मशीन बना रहे हैं। इस मशीन का मेन काम है कि जो अभी सीबीसी काउंट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसको हम निकाल रहे हैं कि ब्लड कितना, मतलब कितना आरबीसी है, कितना डब्ल्यूबीसी और कितना प्लेटलेट्स है। एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू फाइंड जो आरबीसी है उनकी हेल्थ कैसी है, सो हाउ गुड दे आर। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर सिमुलेटिंग हियर। सो हमने क्या किया, एक चैनल लिया है, उसमें एक पिलर डाल दिया है। हाँ, और इस चैनल में, इतने छोटे चैनल में जब रेड ब्लड सेल यहाँ से पास होता है तो वो कुछ प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है, जिसको हम स्टिफनेस ऑफ ब्लड सेल बोलते हैं। मतलब जितना स्टिफ ऑब्जेक्ट होगा उतना वो पास होने में ज्यादा टाइम लगाता है। और उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये फ्लूइड स्ट्रक्चर इंटरेक्शन के सिमुलेशन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे सिमुलेशन और प्रैक्टिकली होने वाली चीजें मैच कर जाए। तो वी हैव टू कम आउट विद द डिजाइन। ये एक डिजाइन बनने में लगभग 10 से 15 हजार रुपया खर्चा आता है। So that's why we will always prefer to simulate this device before we manufacturing। 10 से 15 हजार खर्चा सिर्फ ये एक डिवाइस बनाने के लिए, पर उसके पीछे क्लीन रूम जो बनती है वो कुछ करोर्स में बनती है। तो बेसिकली हमको क्लीन रूम की एक्सेस जो मिलती है, यू कैन इमेजिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और वहां पे हमको 1 या 2 घंटे में एक हाथ डिवाइस करने मिलता है। फिर वो अगर गलत बन गया तो सीधा 6 मंथ्स बाद वापिस आओ। तो इसीलिए हम पहले सिमुलेट करके प्रॉपरली मेक श्योर करना चाहते हैं कि वट एवर वी आर डिजाइनिंग विल वर्क परफेक्टली, एंड दैट्स व्हाई द console or the other simulation software work for us. So this is the idea behind the simulations. And why mechanical engineers? Because it's a mechanical design, and भले इसमें मेम्स इन्वॉल्व हो या फिर उसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व रहती है, थोड़ी सी फोटोलिथोग्राफी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्वॉल्व रहता है। इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी वर्क, बट स्टिल mechanical engineers are the one who will have most proper knowledge about the solvers, the fluid equations, the Navier-Stokes equations, and the other terms such as Reynolds number, boundary conditions, and so on. So I want you to focus on this particular topic. I have my next meeting at 7:45. This is just the introductory meeting. I hope I could make all the concepts clear to you. Now I will show you how to download the software. I will also stop recording, and if you have any doubts, you can ask me.